Before we have already discussed about n-type semiconductor, its formation, energy band and its electron conductivity. Okay, so similarly we can also consider about the p-type semiconductor. So what is p-type semiconductor? So in n-type semiconductor we usually add a pentavalent impurity. Okay, but in case of p-type semiconductor we add trivalent impurities. Okay, so we can say when a trivalent impurities is added with, okay, added with what, na, pure semiconductor, then we get p-type semiconductor, or say a p-type semiconductor is formed. Okay, so when trivalent impurity, suppose आम consider करें गोटे trivalent impurity, suppose gallium. Okay, so gallium गोटे trivalent impurities. ट्राइवेलेंट इम्प्युरिटीज माने कोन ना तार वैलेंस सेल केतोटे इलेक्ट्रॉन थिबे ना तीनोटी इलेक्ट्रॉन थिबे. सो जदि हम गैलियम कंसीडर करछे जार एटॉमिक नंबर 31. ओके, सो जदि हम प्योर सेमीकंडक्टर सहित ऐड करूचे, ओके, ताहले हम कोन पाई परबा ना पी टाइप सेमीकंडक्टर पाई परबा. ओके, सो इट प्रोवाइड्स लार्ज नंबर ऑफ होल्स. जेहेतु आम जमी पढ़ी एन टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहीं तार से कौन कर जो पेंटावैलेंट इम्प्युरिटी ऐड करते सो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन करूला. बट ये कौन हो ट्राइवैलेंट इम्प्युरिटी जो आम ऐड करुचे सो से कौन हम ना इट लैक्स इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज लार्ज, इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ होल्स. ओके, सो ये कौन था ना लार्ज नंबर ऑफ होल प्रोड्यूस हुए. So it provides large number of holes in case of p-type semiconductor. So p-type semiconductor example कौन ना गैलियम जार एटॉमिक नंबर होची 31 and इंडियम जार एटॉमिक नंबर होची 49. Okay, so come to its formation. So consider germanium added with gallium. Okay, so जमिति आमे n type semiconductor कौन प्रोड्यूस मान कौन कंसीडर करथिले germanium सहित आमे आर्सेनिक कंसीडर करथिले. Similarly आमे एठी germanium सहित gallium कंसीडर करबा टू फॉर्म p type semiconductor. Okay, so जदि आमे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिबा ताले गैलियम रो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 and 4p1. so our outermost cell केतोटी इलेक्ट्रॉन अछन ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होचंदी टोटल 3. okay, 2 plus 1 that is 3. so एटा हो जोटे ट्राइवैलेंट इलेक्ट्रॉन. सो आम आगु जर्मानियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करिचे. सो जदि आम फिगर को देखिबा ताले सो गैलियम केतोटी इलेक्ट्रॉन अछंती ना तीनटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अछंती. जर्मानियम केतोटी अछंती ना चारोटी इलेक्ट्रॉन अछंती. सो जर्मानियम चारोटी गैलियम तीनोटी सहित केमिति बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो बा गैलियम तीनोटी, सो जर्मानियम केवल तीनोटी इलेक्ट्रॉन सहित बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो, बाकी गोटे इलेक्ट्रॉन सहित बॉन्ड फॉर्मेशन करि परिवो नाही. सो एठी there is a deficient of electrons, that means there is a presence of holes. Hole is nothing but the absence of electron. Okay, so जोटी electron absent अछि सो ताम ताको कहि परबा hole. Okay, so हेले एठी कोन फॉर्मेशन हला ना गोटे होल फॉर्मेशन हला ड्यू टू गैलियम एटम. सिमिलरली जदि गोटे होल क्रिस्टल एंड जदि नंबर ऑफ गैलियम एटम्स थांती ताले नंबर ऑफ होल्स भी प्रोड्यूस हो. तामाने कोन सो p टाइप फॉर्मेशन पई p टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन पई हमको कोन कंसीडर करे पड़िबो ना ट्राइवैलेंट एटम बा ट्राइवैलेंट इम्प्युरिटीज हमको कंसीडर करबा को पड़िबो. ओके, सो नेक्स्ट कम टू एनर्जी बैंड. सो इटा होची एनर्जी बैंड डायग्राम. सो जेमते हमें देखिथिले सो एठी हमें नीचे पोटेंशियल एंड दिस इज द एनर्जी. ओके, सो गोटे होची कंडक्शन बैंड, अनदर इज वैलेंस बैंड. सो if we talk about energy band diagram of p-type semiconductor, here holes are dominant over electrons. कहीं ना हमर p-type semiconductor माने positive type semiconductor तार ना जेमिति हमें जानिचे जे positive due to number of holes. okay, so n type is due to number of electrons or negative charge and p type is due to number of holes or positive charge. so जेहेतु एटी positive बा holes रो quantity अधिका बा number अधिका, so here holes are dominant over electrons and called p types. okay, so that's why it is called as p type semiconductor. so जो semiconductor number of holes रो number अधिका थिबो सो ताकू का जो p type. so जो semiconductor number of electrons रो number अधिका थिबो ताल ताकू हम कोन कहबा
n-type semiconductor. So next come to conductivity. So here similarly we have connected p-type semiconductor with external potential. Okay, so it p-type semiconductor majority charge carrier कोण ना positive बा holes. Okay, so it हम show करचे number of holes. Okay, so besides these holes there must be some electrons. Okay, so ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ potential difference ଏଠି connect କରୁଛେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ holes ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି so ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ obviously बैटेरी नेगेटिव टर्मिनल आड़को अट्रैक्ट हेबे. ओके, सो से डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हमर कोन हबो ना करंट फ्लो हबो. सो करंट conduction is due to purely holes, that means positive charge in case of p type semiconductor. Okay, when potential difference is applied, holes are shifted from one covalent bond to another and are directed towards the negative terminal of the constituent what negative terminal of the battery and constituting the whole current. कहीं ना एटी जो current formation होची due to this hole and this current is known as the whole current. And in case of n-type semiconductor, the current is due to the movement of the electrons and that current is known as the electron current. And in case p-type semiconductor, the current is known as whole current. Okay, so this is all about p-type semiconductor.